All right, so we have our class on paper attempting techniques for psychology. For those of you who do know me already, my name is Umme Abiha, and I teach you guys psychology. I teach you guys general science, जो GSA में होता है, and also one paper exam जो आपका होता है for your MPT, for your one paper exams जैसे तहसीलदार का आ रहा है या फिर for your GK जो आपके PMS में होता है. That's an entire subject. So today we're going to start talking about the paper attempting techniques in psychology. Okay, how you can score higher in your psychology exam. And this class is going to be helpful for anybody who is giving the upcoming CSS special exam or the CSS 2024 exam. So anybody who has already prepared for the subject and knows what I'm talking about, उनके लिए तो helpful होगी. Lekin for some students who have just started out with their preparation of psychology and they're still not sure whether they should opt for the subject or not, they haven't studied the subject before, so they don't know the nature of the subject. So उन लोगों के लिए भी class helpful होगी. Because number one, we're going to talk about lots of examples that you can write in your psychology paper, and also we will talk about how you can score high in psychology. तो students जो सिर्फ अभी psychology उन्होंने पढ़नी start नहीं की, तो अक्सर उनकी myth होती है कि psychology is not a very high scoring subject. तो उनके लिए भी ये वाली myth आज हम break करेंगे कि psychology is a very high scoring subject and you can do very very well in psychology. But of course, if you follow the right principles and you follow the rules of the subject, ठीक है. So we're going to talk about all the rules of the subject as well. So जो हम आज basically जो tips की बात करेंगे, some of the tips are just tips related to your paper attempting techniques, जिसमें आपके structure या आपकी how you present your content वो आ जाती है, ठीक है. Paper presentation आ जाती है. But some of the tips are going to be related to the content. ठीक है, how you can improve your content while you're studying. So you guys still have time till your exam. तो ये वाली जो दोनों tips हैं, these tips are for in the exam. ठीक है, in those 3 hours आप अपने जो आपने content already इकट्ठा कर लिया उसको आप कैसे बेहतर तरीके से examiner को explain कर सकते हैं. And this content tip is for during your preparation. ठीक है. A few days ago, I discussed tips for general science. ठीक है, we had a lecture on general science के paper attempting techniques and tips. So all of those tips that we discussed in that lecture about the headings को comprehensive कैसे बनाना है, time को micromanage कैसे करते हैं, how you should add diagrams, the different types of diagrams you can add, all of those tips, those general tips go for psychology as well. So I'm not going to repeat things. आप लोग वो वाली चीजें वहीं से cover कर लें कि different types of diagrams कैसे होते हैं. We talked about that in a lot of detail in that lecture, so it's available in YouTube. Go through that lecture. और उसमें जो आप लोग चीजें psychology में add कर सकते हैं वो आपको वहीं से मिल जाएंगी. Today we're going to talk about some new things जो उस दिन हम लोगों ने science के paper से relevant नहीं थी. So first of all, let's start our discussion from a past paper question, and this is from 2023. So again, let's very quickly talk about how to break down a question, which we discussed in the science class as well. लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको psychology के perspective से बात करते हैं कि how you can break down the question. So the question is, what is the Gestalt School of Psychology? Right, major Gestalt principles of visual perception. So it's a no-brainer that your first heading, which remember from your science class, is known as the H1 heading. So the first heading is what is the Gestalt School of Psychology? It is the exact keywords from the question. ठीक है, तो आप इसमें जो ना explain कर दें. फिर tip is कि आप जो Gestalt School में जो major names हैं उसको आप bold कर दें और आप उसको marker से लिखते हैं. I didn't bold them here, but you understand कि आप उसको या तो bold कर दें अपने paragraph में ही या तो आप उसको as a diagram बना दें कि the major psychologist in the Gestalt School of Psychology. तो आप यहाँ पे तीनों नाम as a diagram mention कर दें. ठीक है. फिर the another part of the question is application of the Gestalt school of thought in psychology. So again, this question is not directly asked over here, lekin in psychology, when you explain the what part of any school of psychology, तो आप उसकी application जब तक नहीं बताएंगे कि practically how is that school helpful, तो आपका सवाल complete नहीं है.
So again, in science, we talked about the structure of the answer and the headings come directly from the question. Like in psychology, you need to go one step ahead and you need to be a little smart कि आप सोचें कि what के अलावा जब आप उसकी basic definition और description दे रहे हैं उसमें उसके अलावा what else is a relevant heading. तो जब आप application of Gestalt school explain कर देंगे तो वो भी again हमने उसको भी H2s में break down किया हुआ. Now the next part of the question was write major Gestalt principles of visual perception. So these principles are very, very easy. I hope that all of you have covered them. They're simple. So how can you go one step ahead to get better marks? सब easily explain कर सकते हैं कि first of all we have a law of figure and ground. उसमें आप उसको explain कर दें कि we perceive objects as figures that stand out from the background. So that's simple. Everybody will do that. what you can do is कि आप साथ उसकी example भी बता दें. हमने vase वाली example पढ़ी होती है जिसमें you can either perceive a vase or you can perceive the two persons. Another Gestalt principle is known as the law of proximity. Again आप इसको explain कर दें, उसको define कर दें. फिर you can give an example, ठीक है, and this example is a daily life example. ठीक है, when you see a group of people standing together, you're more likely to see them or perceive them as a group. ठीक है, फिर या तो आप इसको थोड़ा और अगर अच्छे से एग्जांपल देना चाहें तो आप इसको सोशल साइकोलॉजी से एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई people form relationships when they're geographically close together. इस तरह से neighborhood communities बनती हैं. So this is according to the law of proximity. ठीक है, and then also notice the structure कि मैंने सबसे पहले प्रिंसिपल का नाम लिखा फिर मैंने एग्जाम्पल को अलग से लिखा. ठीक है, and you can also go ahead and add two examples under each heading. And then law of similarity में again you can explain the definition और फिर आप ये वाली जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है दिस इज लाइक मोर ऑफ अ टेक्स्ट बुक एग्जांपल. अगर आप चाहें तो आप इसको भी एक एग्जांपल 2 लिख लें, more of a daily life example कि भाई similar elements are perceived as belonging to the same group. तो अगर हम इसको social psychology में एक concept है prejudice का, तो अगर उसके context में हम देखें कि people in the context of prejudice people might generalize the behavior of one person from a particular group to the entire group based on the characteristics of similarity. कि they might there might be a similarity of race or a similarity of ethnicity. ठीक है, so again you can explain the concept of prejudice, which is quite a technical concept in social psychology, using just one simple Gestalt principle. ठीक है, फिर again similarly आप इस तरह के जो सारे principles हैं you can think of examples जो आप daily life से कुछ concepts को explain कर सकते हैं. तो आप हर के नीचे make sure number one that you label it as an example, और अगर आप कोशिश करें कि अगर आप हर के नीचे 2 examples डाल सकें हर heading के नीचे, so that would be a wonderful idea. ठीक हो गया. So the number one skill that you've learned from this question from 2023 is number one कि आपने किस तरह से you need to learn how to think beyond what the question's asking and think of course relevantly कि आप और क्या आपकी heading हो सकती है which is very relevant to the answer and you should add it. Number two, you've learned कि किस तरह से आपने of course diagram तो बनाना है, so that's your number two skill. Number three, how we can divide the structure कि किस तरह से हमने H1 heading डाली है और फिर this is the second subheading and then we have gone to H3 headings. So remember the best structure is where कि आप H1 के बाद आप H2 डालें और आप कोशिश करें कि आप H3 तक भी चले जाएं. So this is how you can structure your answer. And then number 4 we discussed how you can make a diagram of the main psychologists of that area. So again, that's a very important thing. Or if you don't want to make a diagram, you can still at least mention the names in bold or in or use a marker to mention the names. Okay, and your examples must be a little unique, a little different from the examples that are mentioned in the textbook. And how can they be unique? एक तो क्लास में मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को different examples बताया करूँ, but also by thinking of your own examples, you can of course make sure that they're different from everyone else. Here, another question from 2023 is describe in detail Jean Piaget's theory and stages of cognitive development. Again, a short introduction. Introduction में हमने जो Piaget की जो बहुत ज़्यादा उसकी जो central बात है ना कि children learn through active exploration and interaction with their environment. That's how development of children works.
ठीक है, तो आप उसको चाहे अंडरलाइन कर दें या इंट्रोडक्शन में ही मेंशन कर दें। फिर अगेन दी H1 हेडिंग, जिसमें मैंने एज भी हेडिंग के साथ ही मेंशन कर दी। फिर इंस्टेड ऑफ राइटिंग जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंसरी मोटर स्टेज, आई हैव used the two important key terms, object permanence and stranger anxiety, to explain the sensory motor stage. Here, again, this is optional, but it's very important if you want to get extra marks कि आप sensory motor stage से कोई example बता दें. The examples are very simple. Okay, for example, a baby cries when their mother leaves the room, even though they know that the mother will come back. ठीक है. Yeah, a baby looks for their mother when the mother goes away from the room. So this is an example of object permanence. कि किस तरह से infants know that the object will continue to exist even when it's out of sight. So it's not out of sight, out of mind after about 8 months. Um, in the sensory motor stage. So simple examples and daily life examples हैं. फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में अगेन instead of explaining this in a paragraph form, I've broken this down into headings, जो कि प्याजी ने खुद headings दी थी. And again, you can use an example. फिर concrete operational stage में again you can use subheadings, and these subheadings, notice these subheadings are the jargon that Piaget himself used. ठीक है, ये मैंने खुद से नहीं बनाई है. ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल हम बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं कि one this is for conservation कि किस तरह से when a child understands that when you convert water from a tall narrow glass to a very short wide glass, the amount of water still remains the same. So this could be quoted as an example over here, and notice again that the example has a separate heading. तो आपने prose लंबे से ऐसे format में हर चीज को नहीं add कर देना. फिर जो formal operations stage है उसमें भी again we have subheadings from Piaget's थ्योरी, और फिर उसमें भी आप एक एग्जांपल ऐड कर दें. फिर जो प्याजे ने दो कॉन्सेप्ट्स दिए थे, दैट बेसिकली ड्राइव लर्निंग, assimilation and accommodation. So again, I forgot to label this example in bold. So for example, if a child has a schema that all birds can fly, so if they see a penguin, so they will need to accommodate their schema, and then accommodate again is a technical jargon over here. So you can label this example separately again. Now let's go back to the question. The question was, okay, describe in detail Jean Piaget's theory and stages of cognitive development. So if you want, आप सिर्फ यहाँ तक अपने सवाल को खत्म कर सकते हैं कि that could be the end of your question. But if you want to go one step further, you can also do a critical analysis of Jean Piaget's theory of cognitive development. और critical analysis में क्या होता है, आपकी strengths होती हैं और weaknesses होती हैं. ठीक है, strengths होती हैं और weaknesses. So I've gone in quite a lot of detail about the critical analysis. ठीक है, क्योंकि I wanted to explain the concept कि critical analysis भी आप लोगों ने हर theory का करना है. अगर आप चाहें तो critical analysis में आप सिर्फ इसकी headings को डाल दें. ठीक है, because the question is not directly on critical analysis of Piaget's theory. The question was describe his theory. तो इस वजह से critical analysis is not compulsory over here. ठीक है, और अगर आप चाहते हैं just to show the examiner that you know his theory in quite a lot of detail, आप उसको further उसको apply कर सकते हैं. For example, आप application की भी by the way यहाँ पे heading डाल सकते हैं कि how can Piaget's theory be applied to today's education, for example. तो आप इस तरह से you can get extra marks. But again, because the question is not primarily on the analysis, so don't start from there, or less than 20% of your answer should be on the critical analysis. ठीक है कि आपने सारा आपने अपना content cover कर लिया and you still had 2 minutes, तो आप जो ना उसको चाहे diagram form में explain कर दें, ठीक है, चाहे आप उसको एक separate heading बना दें, or you could also mention the points of the critical analysis as part of the conclusion. ठीक है, so this is optional, और इस तरह की optional चीजें should not come at a cost of the time of other questions कि आप अपने second question के जो है ना you're borrowing 5 minutes of that question just to write the critical analysis. ठीक है, so if you're the kind of person who has this kind of study, who studied psychology in depth, yeah, even if you haven't studied psychology in depth, you can think and you can understand कि किस theory की क्या strengths और weaknesses हो सकती हैं, because this is very simple stuff if you've studied psychology properly and thoroughly. तो आप जरूर अपनी writing speed को इतना तेज करें कि आप ये वाली चीजें add कर सकें.
ठीक है। सो इस वाले सवाल से हमने सीखा कि आपने क्रिटिकल एनालिसिस कब और कहाँ और कैसे डालना है, और आपने एग्जांपल्स विच आर वेरी सिंपल एवरीडे एग्जांपल्स आपने सिर्फ सोचने हैं। आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा रीडिंग, एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक, एक्स्ट्रा टीचर्स की जरूरत नहीं है। जस्ट नीड टू हैव स्टडीड साइकोलॉजी इन डिटेल, कि आपको उसका, आपको सारे कॉन्सेप्ट की समझ आती हो, ताकि आप खुद से जब एग्जांपल बनाए तो द एग्जांपल इज एक्चुअली एक्यूरेट एंड इट्स नॉट irrelevant. Another question is, what are personality disorders? Explain in detail. Now, the point of showing you guys this question is, okay, first of all, you have to define personality disorders, okay, and then you have to explain briefly, very briefly, the etiology or the causes of personality disorders, because that could be genetic or it could be due to environmental factors, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन many students found it a little challenging, क्योंकि यूजुअली पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हमने पढ़े नहीं होते हैं। तो इस तरह के सवाल के लिए लेट्स से कि आपको ये सारा नहीं आता था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू द डीएसएम, तो आप बात कर सकते हैं फीचर्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के, बिकॉज रिमेंबर दैट वी स्टडी द फीचर्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी, के किस तरह से द the abnormal behavior is usually deviant, it's distressing. तो आप वही सारी बातें आप यहाँ पे कर दें as features of personality disorder, because personality disorder again is an example of abnormal behavior. ठीक है। आपकी is dysfunctionality is one characteristic of abnormal behavior, and hence it would be a characteristic of personality disorders as well. Of course, if you know the question, so it's going to be really easy to attempt कि आप जो ना, because अगर आपको सिर्फ नाम भी पता हो कि paranoid personality disorder, तो आप उसको थोड़ा सा explain कर सकते हैं। तो if you know the question well, make sure कि इस तरह के सवाल के लिए आप ऐसे टेबल बना लें कि टेबल में आपने जो है ना सारे के सारे personality disorders को summarize कर दिया, and then because the personality disorders are classified into clusters, तो आपकी ये वाली H1 heading हो जाएगी, ये H2 heading हो जाएगी, and then one more thing कि instead of explaining the paranoid personality disorder in general detail, उसको भी मैंने divide कर दिया कि पहले मैंने describe किया, or you can say what is paranoid personality disorder instead of that entire question, मैं सिर्फ description का word लिख दिया, फिर मैंने symptoms लिखे, ठीक है, जो आप लोगों का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, और यूजुअली डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में डीएसएम के ही स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ, तो आप चाहें तो आप इसको इंस्टेड ऑफ सिम्टम्स यू कैन यूज द वर्ड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, और फिर इम्पैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपने हर सब हेडिंग को इस तरह से डिवाइड करना है इंस्टेड ऑफ सम जनरल इंफॉर्मेशन, और अगर आप उस जनरल इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखें तो आप शायद यही तीन बातें कर रहे हैं, but because you did not make these subheadings, you did not go into this microstructure. Okay, everybody gets the macro structure right, but if you go into this microstructure and make subheadings, so of course you'll be able to think better. Your thinking is streamlined, and secondly, the examiner, it's very easy for the examiner to know whether you deserve the marks or you don't. Okay, and then a cluster A, B, or C को properly आप explain कर दें. You can read this later on if you haven't covered this topic. Here, if you want, you can also explain the personality disorders according to the perspectives of psychology. For example, जो psychoanalytical perspective है, वो personality disorders को कैसे explain करेगा, ठीक है। So the point of showing you this question is कि let's say आपने कोई सवाल है और आपने जरूर उसको आपको attempt करना है, that's the only option you have, और आपने उस सवाल को सही से you haven't studied that topic properly, लेकिन आपको attempt करना है, तो instead of getting stressed out and thinking कि अच्छा I don't know this question, I failed this exam, instead of all of these negative thoughts, आप सोचें कि आपने साइकोलॉजी में ओवरऑल क्या पढ़ा है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो टॉपिक है, ये एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी का एक सब टॉपिक है। थिंक ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एंड देयर यू हैव योर फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। फिर आप सोचें कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर किसने किसने दी है, तो यू कैन टॉक अ लिटिल बिट अबाउट DSM-5 की DSM-5 और उसकी जो टेक्स्ट रिवीजन है TR is the book that has given the criteria of all these personality disorders. फिर आप explain कर दें, define the personality disorders को easily कर सकते हैं, because you're just using the definition of psychology and the definition of abnormal psychology and the definition of personality, और उसको आप जो ना you can use these three definitions to give the definition of personality disorders, even if you have never studied personality disorders before. Okay, so you can give features of personality disorders easily.
ठीक है, तो you might not get very very good marks from this, लेकिन you will at least get 5-10 marks if you do it smartly. And then as I said, you can explain personality disorder from the schools of psychology के how would the behavioral school of psychology explain personality disorders? How would the cognitive school of psychology explain personality disorders? So basically, think in terms of the syllabus. Don't panic. ठीक है? Make the best of the time you have in your exam and try to sort of invent information. ठीक है? तो उसमें आपको let's say 18 marks नहीं आएंगे, but you might get 5 to 7 marks just on the basis of that information that you thought while you were in the exam. So the point of showing you this question was कि किस तरह से आपने exam में make use of the content you have, and when you panic so you just get blank. आप एक दफा decide कर लें, अपने आप को label कर लें कि अच्छा ये वाला सवाल तो मुझे आता ही नहीं है, तो आपको वाकई कभी भी नहीं आता होगा. Okay, another question. Now, this question is on emotions and the theories of emotions, but the way of asking this question is a little different and interesting. The question is, write a note on the importance of emotions in human psychology. Okay, so importance of of emotions in human psychology. What are the major theories that describe the significance of emotions in human psychology? So theories that explain the significance of emotions. ठीक है, I'll come to the introduction later on. अच्छा, importance of emotions. अक्सर हम लोग इसको एज अ डायरेक्ट हेडिंग नहीं हम इसको पढ़ते हैं, तो एग्जाम में आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा कि why are emotions important. तो why are emotions important start from yourself. Why are emotions important for an individual? आपके लाइफ में why were emotions important? Then think in terms of what are the different types of emotions. ठीक है, तो हर टाइप ऑफ इमोशन को इस तरह से जो है ना आप लोग ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं कि टाइप ऑफ इमोशन, और फिर हाउ वाज दिस इमोशन इम्पोर्टेंट फॉर यू एज एन इंडिविजुअल. ठीक है, एंड देन यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कम्युनिटी में हाउ डज एन इमोशन हेल्प यू सोशली एज ए कम्युनिटी. ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं. आपने स्ट्रेस को पढ़ा है तो रिमेंबर कि स्ट्रेस इज आल्सो ड्यू टू इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस की वजह से स्ट्रेस होता है. तो थिंक इन टर्म्स ऑफ के स्ट्रेस के हम लोगों ने पढ़े हैं कि स्ट्रेस के इफेक्ट्स ऑन फिजिकल हेल्थ, ऑन मेंटल हेल्थ. तो इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड दिस हेडिंग as it is in your preparation, आप जो है ना by relating the concept of emotions to different other concepts that you've already studied, तो आप इस तरह से brainstorming कर सकते हैं. Different brainstorming methods से कि आपको as an individual how do emotions help you, or how do emotions even make your life more valuable, or फिर how do emotions affect you and help you as a community. ठीक है, so in psychology some of the questions require brainstorming. आपने शायद वो कॉन्सेप्ट पहले कभी नहीं पढ़ा होगा. ठीक है, फिर the next part of the question was major theories of emotions that describe the significance of emotions in human behaviors. So basically, how do emotions influence human behaviors? ठीक है, so again you could go on the types of emotions and then explain each type of emotion affecting human behavior. तो इस तरह से आप अपना एग्जाम में चार्ट बना सकते हैं. एंड देन नोटिस कि जेम्स लैंग थ्योरी को भी मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस कि उसकी जो हेडिंग है, उसकी हेडिंग को किस तरह से मैंने जो जेम्स लैंग थ्योरी की जो बेसिक बात है कि इमोशंस आर रिएक्शंस टू फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, दैट्स व्हाट द जेम्स लैंग थ्योरी बेसिकली सेज, राइट. तो वही चीज मैंने उसकी हेडिंग में डाल दी है. फिर उसको मैं व्हाट इज द जेम्स लैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया, एंड देन how does the James Lang theory explain the significance of human emotions? ठीक है, and then I very briefly talked about each theory. ठीक है, और मेरा जो structure है ना, it's very uniform. कि I've talked about the description and the significance, description and the significance, and wherever I have the names, तो मैंने उन names को mention किया. Lazarus, Paul Ekman. ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी नेम्स है ना, आप उनको एक अलग से टेबल फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इफ यू डोंट हैव द टाइम टू मेक अ सेपरेट टेबल और डायग्राम, तो आप इनको एटलीस्ट मार्कर से बोल्ड जरूर कर दिया करें. तो दिस इज हाउ you can attempt a question by thinking in terms of these two headings. ठीक है, और brainstorming in these two headings. ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है और सिग्निफिकेंस भी.
सकती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाएगा कि आपने सिग्निफिकेंस में किस तरह से एक्सप्लेन करना। ठीक है, फिर another question, and hopefully this is going to be our last question before we get to some general discussion. So this question is, what are the major tests to assess human intelligence, right? Relevant tests to measure human intelligence in detail. अच्छा, this is another topic that students have usually not focused on very much. हम लोगों ने जब ये क्लास में पढ़ा था तो हमने ये when we studied testing and assessment हमने तब इसके बारे में बात की थी कि intelligence test क्या होते हैं. फिर I also gave you items of the Wechsler Adult Intelligence Test as well as the Stanford Binet Intelligence Test. So if you've studied in detail, आप इसकी even items अपने क्लास नोट से चेक करके यहाँ पे डाल सकते हैं कि इस टेस्ट में इस तरह की आइटम्स हैं. बट लेट्स से कि आपने इस कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल में नहीं स्टडी किया. ठीक है, तो उसके लिए आई हैव दिस एक्सप्लेनेशन कि लेट्स से आपको इंटेलिजेंस टेस्ट के सिर्फ एक आध नाम आता है और आप इसके ऊपर फुल लेंथ आंसर नहीं लिख सकते हैं. तो break down the concept of intelligence into its components. तो उसके लिए we have Gardner's theory of multiple intelligences. ठीक है, जिसमें हम verbal intelligence की बात करते हैं, mathematical intelligence, visual intelligence. Visual intelligence, by the way, is not part of that theory. लेकिन break down the main concept into its components and then think in terms of mathematical intelligence. What are some tests that could test a person's mathematical intelligence? तो आप इसमें math problems, number sequences की बात कर सकते हैं. Again, verbal intelligence को test करने के लिए vocabulary tests होते हैं, reading comprehension test हो सकता है. ठीक है, music intelligence में musical intelligence consists of pitch, rhythm and melody. तो आप इस तरह के tasks लिखते हैं. तो even though you're not talking about standardized intelligence tests, which are evidence based, which are scientific, which are proper tests with proper standards. So even though this answer might not get you very, very good marks, but still you have attempted the question and you'll get about 4 or 5 marks in this as well. Okay, so remember when you're sitting in the exam and you have the first look at your exam paper, or you're like, ये तो सवाल मैंने 50-70% of the exam I don't know it. मैंने ये वाले topics I remember studying them, but I have no clue कि मैंने इसके ऊपर 20 marks का आंसर कैसे लिखना है. Don't panic, relax, think in terms of your syllabus. Don't get shocked. ठीक है, अक्सर students जो है ना, they'll spend the first 20 minutes परेशान होते हुए, stress करते हुए, imagining the worst possible outcomes. If the exam is difficult for you, it's difficult for everybody else as well, right? So instead of panicking, make sure you're mentally prepared before you sit in the exam. के एग्जाम में टोटल 7 questions होते हैं, तो शायद आपको एग्जाम में सिर्फ 2 questions आते हैं अगर आपकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं. ठीक है, और आपने questions 4 attempt करने हैं, तो 2 questions you might know them very well. ठीक है, कि आप उसमें कह सकते हैं कि अच्छा आई नो दीज क्वेश्चंस, लेकिन जो बाकी 2 questions होते हैं हो सकता है कि आपको वो इतने अच्छे ना आते हैं. तो for these 2 questions you have to prepare yourself before you go to the exam. ठीक है, उसमें तैयारी तो of course आप कर रहे हैं, but you never know कि एग्जाम में किस तरह से सवाल आ जाए, आपकी शायद तैयारी अच्छी ना हो, आपको साइकोलॉजी के लिए टाइम ज्यादा अच्छा इतना ज्यादा मिला हो, या it could be for some other subjects as well. So think about the syllabus. ठीक है, think कि ये जो इंटेलिजेंस लफ्ज है, इस इंटेलिजेंस लफ्ज का क्या मतलब है, डिफाइन इट फॉर योरसेल्फ. ठीक है, थिंक ऑफ द components of intelligence. फिर सोचें आपने टेस्टिंग के बारे में, असेसमेंट एंड टेस्टिंग वाला एक चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने असेसमेंट और टेस्टिंग के बारे में क्या कुछ पढ़ा है. ठीक है, तो even if you don't score very good, तो you'll be able to score average. ठीक हो गया. अच्छा, फिर अगर आपने पढ़े हैं इंटेलिजेंस टेस्ट तो आपको पता है कि वेस्लर का एक एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल होता है, फिर देयर इज अ स्केल फॉर चिल्ड्रन एज वेल, जिसमें जो इंटेलिजेंस के मेन एरियाज हैं जैसे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, परसेप्चुअल रीजनिंग, वर्किंग मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, ये सारे टेस्ट होते हैं. पर स्टैनफोर्ड बिने का जो टेस्ट है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इम्पोर्टेंट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस because it measures both verbal as well as non-verbal measures of intelligence. ठीक है, तो आप उसको further break down भी कर सकते हैं. जो हम लोगों ने क्लास में इसकी आइटम्स के लिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आप फर्दर वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है,
फिर एक टेस्ट है आरपीएम, उसके बारे में भी आप वेरी ब्रीफली, तो अगर आपको सिर्फ आप नाम भी आपको टेस्ट के पता हो तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ स्टूडेंट्स के साथ होता है कि अच्छा मैंने एमसीक्यूज की तैयारी की थी तो मुझे नाम तो एक दो टेस्ट के पता है लेकिन मुझे उसको फर्दर एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, तो आप उस पर जनरल उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन लिख लें कि दिस टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस and it measures your memory for example, so you'll get something right. ठीक है, तो this is these are some tips for questions that you're not really good at, and make sure that you go mentally prepared, especially if your revision is not up to mark or it's not the perfect revision. If you guys have any questions, I'll take your questions as well. Otherwise, let's go on and discuss some general concepts. All right, so one very important tip that I want you guys to know is that you need to mention examples. We've already discussed this. तो फॉर एग्जाम्पल आपका जो लर्निंग वाला चैप्टर है उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपके एग्जांपल्स दे मस्ट बी वेरी यूनिक। ठीक है, तो जो क्लास में हम लोग एग्जांपल डिस्कस करते हैं नीडल और डॉक्टर वाली के किस तरह से नीडल इज यूजुअली the unconditioned stimulus or the neutral stimulus at the beginning, and sorry, it is the conditioned stimulus at the beginning to because of the needle up because it leads to pain and fear. ठीक है, it leads to at least pain, so that is the unconditioned stimulus और unconditioned response हो गया ये। ठीक है, फिर आप बात कर सकते हैं कि किस तरह से the site of the doctor's office, ठीक है, just going to the doctor, the site of the doctor which is the neutral stimulus के पहले आपको डॉक्टर को देख के कुछ होता नहीं है, but this neutral stimulus converts into a conditioned stimulus and just looking at the doctor causes you anxiety and pain. ठीक है, तो ये एक अभी अभी मैंने सोची। फिर आप बात कर सकते हैं कि एक मैंने आप लोगों को रीडिंग दी हुई है with classical conditioning. It was related to advertising, how classical conditioning is used in the field of advertising and product sales. तो आप वो वाली बात कर सकते हैं कि for example जो celebrities होते हैं, the celebrity is your unconditioned stimulus, or the positive emotions that we associate with the celebrity are your unconditioned stimulus, which lead to a unconditioned response of positive feelings. तो वो जो प्रोडक्ट होती है जब हम उस प्रोडक्ट को सेलिब्रिटी के साथ एसोसिएट कर लेते हैं तो through the concept of classical conditioning we can explain how the product becomes a classical becomes a conditioned stimulus, and now this product will also elicit those positive feelings which are now the conditioned response. ठीक है, so these are some general examples, but if you want you can actually make examples yourself. जैसे one very interesting example is कि किस तरह से just the aroma of chai, कि हम अभी चाय बेशक पिए नहीं, just the aroma of chai results in feelings of wakefulness. ठीक है, I don't know if it happens with you guys, but it happens with me. Even without taking the first dip of that tea, it gives me a feeling of energy. ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो चाय में जो कैफीन होती है that would be your unconditioned stimulus, because caffeine results in unconditioned response of wakefulness. ठीक है, or you could say of alertness. ठीक है, and then just the aroma of chai becomes your conditioned stimulus, and just by smelling that aroma आपको वो वाली feeling of alertness trigger हो जाती है, which will now be your conditioned response. ठीक है, तो इस तरह से these examples show कि किस तरह by associative learning the neutral stimulus becomes a conditioned stimulus, and it will evoke the same response, the same conditioned response as the one that was being evoked by the natural or unconditioned stimulus. ठीक है, तो इस तरह से these are very daily life examples जो आपको किसी टेक्स्ट बुक से नहीं मिलेंगी, तो these examples are going to be unique to you. तो ये तो कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दी, बट आई आल्सो वांट यू गाइस टू थिंक ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग में इसी तरह से ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी आप लोग एग्जांपल्स सोच सकते हैं। आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स टू गेट योर माइंड्स थिंकिंग के ऑपरेंट कंडीशनिंग में वी हैव पॉजिटिव
reinforcement, and I hope कि आपके concepts clear हों कि positive reinforcement is basically a type of operant conditioning जहाँ पे the desired behavior is strengthened by the addition of a positive reinforcer. ठीक है, तो for example आप इसको behavior, consequence और आउटकम की टर्म्स में आप इसको बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल हो सकती है कि फॉर एग्जांपल if a salesperson makes a sale, तो उसका जो behavior है making a sale, or every new sale that the salesperson makes, he or she gets a commission on that sale. ठीक है, तो the outcome, this is the consequence. ठीक है, this consequence will work as a reinforcer, and the outcome will be the behavior of making the sales will increase. The likelihood of the behavior of making sales will increase in the future. Similarly, you can make an example for negative reinforcement as well. Examples आप तब अच्छे से बना सकते हैं जब आपके खुद के concepts clear हो. So again, negative reinforcement क्या होती है कि this is increasing the desired behavior, it's strengthening the desired behavior, but by removal of a negative reinforcement. ठीक है, तो for example आप behavior की बात कर सकते हैं कि स्टडी से रिलेटेड बिहेवियर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट स्टडीज फॉर एग्जाम. ठीक है, द कॉन्सिक्वेंस इज द रिमूवल ऑफ द रिजल्ट के आपका एक बुरा ग्रेड आए. ठीक है, तो द स्टूडेंट हैज अवॉइडेड और द रिमूवल ऑफ अ नेगेटिव ग्रेड, और फिर उसका आउटकम ये होगा कि द स्टूडेंट इज मोर लाइकली टू स्टडी फॉर एग्जाम्स इन द फ्यूचर एज वेल. But again, similarly, you can think of examples for the concept of positive punishment. Positive punishment, again, remember, it means the addition of a stimulus, of an undesired stimulus, in order to decrease the likelihood of a behavior occurring again in the future. तो अब again यहाँ पे इसको भी in terms of behavior, positive punishment और outcome की example ले सकते हैं. For example, let's say if somebody goes late to work, ठीक है, तो उसकी जो पॉजिटिव पनिशमेंट हो सकती है could be just कि आपका जो सुपरवाइजर है या जो आपका बॉस है वो आपसे नाराज हो या आपको reprimand करे for getting late. और फिर जो आउटकम है कि in order to by adding this aversive or this unwanted or undesired stimulus of getting reprimanded, the behavior of getting late to work is discouraged. ठीक है, तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. फिर वैसे ही नेगेटिव पनिशमेंट को भी आप एक्सप्लेन कर दें कि नेगेटिव पनिशमेंट में अगर अक्सर हम पेरेंट्स की एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव पनिशमेंट. Basically, negative punishment is where a desirable stimulus is removed to decrease the likelihood of a behavior occurring again in the future. So, for example, you can say, okay, let's say a child fails an exam in the school, तो फिर इसमें negative punishment की example हो सकती है कि the parents take away the child's cell phone until the grades improve. So the outcome will be कि the desired stimulus जो कि आपका cell phone था, so because the desired stimulus is removed, the child is motivated to improve his or her grade in school. ठीक है, तो इस तरह से by using very simple and very daily life examples, just make sure that you get them right. You don't mess the example, because if you have the wrong example in your exam, तो आपके वो जो पूरा का पूरा आपके marks है ना वो आप deduct हो जाएंगे. ठीक है, फिर ये होगी कुछ लर्निंग से रिलेटेड एग्जांपल्स. फिर आपके हर चैप्टर में आप एग्जांपल्स दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रॉइड की जो थ्योरी है, फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, कि लेट्स से अ चाइल्ड इज मिसबिहेविंग, तो चाइल्ड इज मिसबिहेविंग, तो आप इसकी रीजन कह सकते हैं टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी गिवन बाय फ्रॉइड के the id is demanding attention but the id is demanding attention, but the ego or the reality principle is not able to control the child's demand for attention, hence the child is misbehaving. ठीक है, तो जब आपने एट ईगो सुपर ईगो को एक्सप्लेन करना हो तो आप ये कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने फ्रॉइड का जो कॉन्सेप्ट ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड है उसको आपने एग्जांपल्स के साथ सब्सटेंशिएट करना, तो यू कुड से गिव अ वेरी डेली लाइफ एग्जांपल के. For example, somebody who is scared of airplanes, for example, might be scared of airplanes because their unconscious mind has associated flying with dangers. ठीक है, तो इस तरह से विद वेरी वेरी सिंपल एंड डेली लाइफ एग्जांपल्स आप किस तरह से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से सब्सटेंशिएट कर सकते हैं और
साइकोलॉजी का जो आपका एग्जाम है, इट्स ऑल अबाउट एग्जांपल्स. ठीक है, स्टूडेंट्स हु डोंट स्कोर वेल इन साइकोलॉजी इज बिकॉज आइदर दे डोंट गिव एग्जांपल्स एट ऑल, or if they do give examples, they give examples from these overused notes. जो मार्केट में आपको सीएसएस के रिलेटेड साइकोलॉजी की जो बुक्स मिल जाती हैं, तो दीज बुक्स आर ओवर यूज. हर कोई उन बुक्स से पढ़ रहा है, तो एग्जामिनर आपके सवाल पे एक फ्रॉम जस्ट अ ग्लांस आई कैन टेल के यू यूज नोट्स, और आपने नोट्स को रट्टे लगा के जो ना आपने आपकी सिर्फ लैंग्वेज और आपके जार्गन और एक्सप्रेशन से पता लग जाता है, बिकॉज स्टूडेंट्स जस्ट कॉपी पेस्ट एवरीथिंग एंड स्टूडेंट्स डोंट यूज देयर ब्रेन. तो एग्जांपल्स आपके अपने होने चाहिए, अगर आपके अपने नहीं भी हैं तो किसी ऐसे टीचर के जो आपको कोई यूनिक एग्जांपल्स बता रहा हो, ताकि आप उसको एग्जाम में मेंशन कर सकें. एंड इफ यू हैव सच गुड एग्जांपल्स तो आप उसको एज ए सेपरेट हेडिंग में मेंशन कर सकें, बिकॉज साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, राइट? और एग्जांपल कुछ अक्सर इतने सिंपल होते हैं. फॉर एग्जांपल सोशल साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कंफर्मिटी का. ठीक है, तो टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंफर्मिटी, okay, I hope you remember conformity is basically the process of changing one's behavior to match the behavior of somebody else. तो conformity में आप बात कर सकते हैं कि let's say कि a person was wearing a new type of clothing because he or she saw other people wearing that clothing. या आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं कि let's say कि अक्सर क्लास में if one student is laughing at a joke, so you also start laughing because everybody else is laughing at the joke. ठीक है, that's you're conforming your behavior to the behavior of everybody else. या एक concept है compliance का in social psychology. अक्सर conformity और compliance में से आपने you have to explain the differences between the two. So your examples should be so good that they can explain the differences. So I hope you remember that compliance is the process of changing one's behavior in response to somebody else's request to change behavior. तो compliance में आप example दे सकते हैं कि let's say कि a child was doing their homework because their parents asked them to do their homework. That's compliance and not conformity. या for example आप बात कर सकते हैं कि you were shopping लेकिन आपने कोई product खरीदी because the salesperson was very persuasive about that product. So that's compliance. लेकिन अगर आप बाकी सबको shopping करते हुए देख रहे हैं और वो लोग ये product खरीद रहे हैं, तो and you're conforming to their behavior, so that's conformity. So a few with just a very basic change in my wording, मैंने आपको बता दिया एक एग्जांपल से conformity और compliance के difference बता दिया. ठीक है, इस तरह से for every single concept that you explain and you can give an example, you must, even if the question has not asked you to give an example explicitly. ठीक हो गया? So that's about giving examples. ठीक है, now let's also talk about how you can add a critical evaluation component in your exam. ठीक है, आपके एग्जाम में इवन इफ द क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्टली ऑन क्रिटिकल एवेल्युएशन, तब भी आप एक छोटा सा बेशक पैराग्राफ या कंक्लूजन में मेंशन करते हैं, आप उसको जरूर क्रिटिकली एवेल्युएट करें, बिकॉज दैट्स व्हाट विल सेट योर आंसर अपार्ट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स इन द एग्जाम. ठीक है, तो जो भी आप लोग थ्योरीज पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ रहे हैं, फ्रॉइड की थ्योरी की भी हमने बात की, तो आप फ्रॉइड की थ्योरी को उसकी एक क्रिटिकल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और क्रिटिकल एनालिसिस को हमेशा आप स्ट्रेंथ्स में और वीकनेसेस में एक्सप्लेन करें कि इस थ्योरी के स्ट्रेंथ्स क्या हैं और इसके वीकनेसेस या इसके लिमिटेशंस क्या हैं. फॉर एग्जांपल फ्रॉइड की थ्योरी की one of the most major strengths of his theory is that he was one of the first to provide such a comprehensive explanation of personality. So again, it's a very simple strength. फिर आप बात कर सकते हैं उसके weaknesses की कि जो फ्रॉइड की थ्योरी है, because it's based on more of case studies and Freud's own patients and anecdotal evidence rather than on scientific research. So इस वजह से one of the most important criticisms of his theory is this one. ठीक है, तो इस तरह से हर थ्योरी के ऊपर. नाउ दिस पार्ट ऑफ माय लेक्चर इज व्हाट आई टोल्ड यू गाइस के दिस इज अबाउट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन कि आपने जो थ्योरीज का हर थ्योरी का क्रिटिकल एनालिसिस, इफ यू हैव द टाइम टू डू इट राइट नाउ, तो आप जरूर इस चीज को इस तरह से कर लें कि हर थ्योरी का क्रिटिकल एनालिसिस आपको पता हो. ठीक है, फिर आप जो मैंने साइंस वाले
जो साइंस वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ टाइप्स ऑफ डायग्राम्स शेयर किए थे, तो उस तरह के आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स बना लें, या अगर आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है तो जो डायग्राम्स मैंने क्लास में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उनके एक सेपरेट नोट्स बना लें, विच विल सर्व एज योर वन पेजर्स। ठीक है, बिकॉज इन योर एग्जाम्स आप लोगों को हर सूरत रिवीजन करके जानी है, एंड the only way of revising the entire syllabus is when you have good one pagers ready। ठीक है, तो इस तरह से और फिर जो सारे important names हैं साइकोलॉजी में, जो सारी important theories हैं, make sure that you make these one pagers। फिर theories की critical evaluation, फिर आपके पास हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दो तीन एग्जांपल्स आप अभी से तैयार करके जाएं। एग्जांपल्स, if you very well confident in your conceptual clarity तो आप एग्जांपल्स खुद से बनाएं, but if you think कि आपकी conceptual clarity शायद इतनी अच्छी ना हो तो आप एग्जांपल्स खुद से नहीं बनाएं, rather get examples from a textbook or from your class notes। ठीक है, तो these are some final revision tips for you guys। और फिर वो जो टाइम मैनेजमेंट वाली बातें थी, राइटिंग स्पीड वाली बातें थी, वो यू कैन रेफर टू द जनरल साइंस लेक्चर, आई डोंट वांट टू रिपीट देम ऑल ओवर अगेन। और जहां तक आपकी जो वर्ड लेंथ है, आपकी आंसर लेंथ है, should be at least 550 to 600 words, and this is apart from your diagram। आपके डायग्राम अलग है और about 600 words तो आप लोग देख लें अभी से, you should know कि आपका एक पेज पे कितना कंटेंट आ जाता है। Here you also know that we should write an introduction and conclusion। Now, अक्सर students are very scared of introduction or conclusion because introduction is the first thing that the examiner is going to read। तो जो आपका introduction है ना, consider it like an abstract of a research paper। अगर आप लोगों ने thesis किया है अपनी बैचलर्स में, तो जो हम abstract लिखते थे जिसमें हम पूरी की पूरी research की summary लिखते थे, आप introduction को इस तरह treat कर सकते हैं। Another way of writing your introduction is कि जो what वाला part है ना, वो आप introduction में आंसर कर दें। Another way of writing your introduction is कि जो आपने अपने सवाल में सारे के सारे jargons या कोई names use करने हैं, some famous psychologists of that area, ठीक है, आप वो introduction में बता दें। आपने कोई theory का नाम discuss करना है, वो आप introduction में बता दें। And another way of writing your introduction is कि जो आपने headings डाली हैं अपने पूरे पेपर में, जो आपके H1 से H3 तक जो आपकी हेडिंग्स हैं वो आप इंट्रोडक्शन में अपने डाल दें। Now let's talk about I'll show you sample introductions for all four techniques। तो for the first question जो आपका इंट्रोडक्शन है वो मैंने इस तरीके से I've answered the what part in the introduction, and I've given the psychologist's name in the introduction। So that's one way of writing your introduction। ठीक है, let's have a look at the next question। The second question में जो मैंने introduction लिखा है उसमें मैंने I've answered what is Jean Piaget's theory of cognitive development। ठीक है, so I've answered this in the introduction। फिर in the next question जो मेरा introduction लिखने का तरीका था, that has changed कि अब मैंने again I've explained what personality disorders are and I've explained the different headings of personality disorders। ठीक है, मैंने अपना सारा jargon introduction में डाल दिया। मैंने DSM का हवाला देना था, मैंने वो भी introduction में डाल दिया। ठीक है, so that's another way of writing your introduction। Here, yet another way of writing your introduction is this one। इस वाले सवाल में if you notice कि जो मैंने the first part of my introduction answers the first part of the question and the second part of the introduction answers the second part of the question। ठीक है, और इसमें जो है ना मैंने सारी की सारी headings उठाई। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं समझ आ रहा है तो आप इंट्रोडक्शन में शुरू में लीव हाफ अ पेज टू वन थर्ड ऑफ अ पेज ब्लैंक और अपना पूरा का पूरा सवाल अटेम्प्ट कर लें, और फिर जब आप इंट्रोडक्शन लिखें तो आप इंट्रोडक्शन में जो आपकी हेडिंग्स हैं उसको कन्वर्ट कर लें एज सेंटेंसेस। सो फॉर एग्जांपल, your introduction from this question's headings could be the importance of human emotions and human psychology is that emotions serve as communicators, help in decision making, are important for mental and physical health, and emotions also dictate social dynamics। ठीक है, तो आपने headings को convert कर दिया introduction में, because the introduction is the first part of your answer that the examiner is going to see। तो आपका introduction बहुत concise होना चाहिए and it should have all of that jargon जो आपने अपने text में explain करना। फिर इस तरह से ये जो मेरी एक लंबी सी heading है इसको भी मैंने introduction में add किया हुआ है, and you can have a look at the introduction।
The James Lange theory posits that emotions are reactions to physiological responses. The Cannon-Barr theory suggests that emotions and physiological reactions occur simultaneously. तो आपने सारा का सारा जो है ना जो आपका मेजर कंटेंट है आपने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर दिया. अनदर वे टू थिंक ऑफ दिस इज के आपने पूरे के पूरे सवाल का एक बहुत ब्रीफ सा बहुत कंसाइज सा आंसर इंट्रोडक्शन में ही दे दिया. तो इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु कैन थिंक वेरी इजीली और उसकी जो थिंकिंग स्पीड है वो अच्छी है और उसकी रिकॉल की स्पीड अच्छी है तो वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर ले. बट इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन who needs to get in the flow कि एक क्वेश्चन किया दूसरा क्वेश्चन दूसरे डोमेन ऑफ साइकोलॉजी से है so you need time to get in the flow तो आप इंट्रोडक्शन के लिए skip half to one third of a page depending upon your um, on your writing style. आप इतना पार्ट स्किप कर दें और फिर आप हेडिंग्स से स्टार्ट कर लें और फिर उन्हीं हेडिंग्स को आप कन्वर्ट कर दें into sentences which will form a very good introduction. ठीक हो गया. एंड देन अगेन फॉर योर कंक्लूजन एज वेल, कंक्लूजन आप लिखते हैं या नहीं दैट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप लिखते हैं तो इट्स गुड थिंग. तो कंक्लूजन में आपकी जो बात है ना जो आपने सवाल में जो जो इम्पोर्टेंट बात की आप उसको कंक्लूड कर दें. बट योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ अदर क्वेश्चंस. तो मेक श्योर आपकी राइटिंग स्पीड इतनी हो कि आप इजीली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए टाइम निकाल सकें. बिकॉज यूजली इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हम रिपीट ही कर रहे होते हैं. So it should not come at the cost of other questions, and you should try to add a different element to it. कि आप उसमें कोई example highlight कर दें, आप उसका structure थोड़ा सा change कर दें, and the introduction and conclusion should not be the same. कि एक ही चीज आप एक ही बातों को उठा के different words के साथ conclusion में लिख दें. That's not how your introduction and conclusion should be. So these are some quick tips about your psychology exam. Just by the use of examples and critical analysis and a good structure with H1 to H3 and by the use of diagrams. ठीक है, diagrams are very important in your paper presentation. और diagrams आपने general science वाले lecture से you can study the different types of diagrams. ठीक है, कुछ तो diagrams are very psychology specific जैसे ये वाला diagram हो गया. ठीक है, लेकिन कुछ डायग्राम्स आप जब वहां से पढ़ेंगे तो you'll get more idea कि आप किस तरह से you can think in terms of the different types of diagrams or micro diagrams क्या होते हैं. So that's all from my part for the paper attempting techniques for psychology. Just one final tip, don't get stressed out. Make sure कि आप अच्छी सी revision करके exam में जाएं. ठीक है, don't rely on your memory so much because if you remember from my introduction lectures जो demo lectures होते हैं उसमें मैं Ebbinghaus के memory curve का बताती होती हूँ. तो अगर आपको वो वाला concept पता है तो you will know कि you should not rely on your memory. कि आपने महीना पहले psychology को तैयार कर लिया था तो you will still need to revise it, and the best method of revision is कि आपने वन पेजेस बनाए हों. अगर नहीं बनाए हुए तो आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस को लिस्ट आउट करें एंड थिंक ऑफ द टॉपिक्स व्हिच यू नो रियली वेल एंड थिंक ऑफ द टॉपिक्स जिसमें यू विश कि ये वाला टॉपिक एग्जाम में ना आए. ठीक है, तो सोचें ये वाला टॉपिक एग्जाम में आ जाए तो आप उसके साथ कंफर्टेबल होंगे होंगे तो चलो गुड. बट इफ यू थिंक आप उस टॉपिक के साथ नहीं कंफर्टेबल होंगे तो उसके लिए अभी से spend some time and make one pagers. और if you still have not attempted questions properly तो कोई इस तरह के सवालात को attempt करें जो ज़्यादा comprehensive questions हों जो पूरे के पूरे टॉपिक को summarize करते हों. तो इस तरह के questions attempt कर लें, फिर उसमें value additions करें. ये जो everything I've talked about today is value addition, right? Students often miss out this part. They just focus on studying and gathering the content and they don't focus on these little things that's going to get you from even 15 marks to 17 marks. Or if you're standing at a 17, it might get you a good 20 mark out of 20 in your exam. So these are some quick tips regarding scoring high in psychology, or even if you're just starting out your psychology preparation, this is how you should take your preparation. कि किस तरह से आपने critical evaluation का ध्यान रखना है आपने उसको अपनी पढ़ाई में साथ साथ. if you're studying from a textbook or if you're studying from a teacher तो आप इस तरह से critical evaluation की अलग से headings बनाते जाएं और आप examples के terms में सोचें. And hopefully this will also develop an interest in psychology जो लोग अभी psychology जिन्होंने पढ़नी start नहीं की कि how this is such an interesting subject, how it explains human behavior. तो आप जितना interest लेके पढ़ते हैं और जितना enjoy करके पढ़ते हैं that's that is directly proportional to how well you score in your exam.
ठीक हो गया. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. अगर आप लोगों के कुछ सवाल हो तो आप यूट्यूब पे कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं, तो आई विल ट्राई एंड आंसर देम ओवर देयर. So make sure that you study well, you revise well, you attempt questions, you note down these paper attempting techniques, and best of luck.